Hello students, hope you all are well. Let us start our next video on the basis of elements of account standard 11 part 1. Total you are having in part 1 11 chapters. Out of that chapter 7, 1 to 7 I completed. Now chapter 8 is going on. This is the second video of chapter 8. In the first video I explained the what is called chapter 8, मतलब journal paper, and how many types of journal entries are coming in journal paper. That is 6 types of journal entries are coming. Out of that, first, second and third opening entry, the transactions which are not coming in the subsidiary books, and special type of transactions which are not coming in the other subsidiary books that was explained in the previous video. Now in this video, the 4th, 5th and 6th, that three remaining types of transactions which are not coming in other subsidiary books, which are coming in the journal paper, we will explain. The 4th point is transactions of inter-account transfer. Inter-account transfer मतलब अंदर transfer हो गया. I will give the one example not from your book so that you can understand inter-account transfer. What does it mean? Suppose you sold goods to Mr. X for rupees 10,000. Credit. Suppose you purchase goods from Mr. Y of rupees 7,000. That you take 15,000. You have purchased goods from Y, you have sold goods to X. On credit. How much you have to pay to Mr. Y? 15,000. How much you have to get from Mr. X? 10,000. Mr. X is your debtors. Mr. Y is your creditors. Mr. X is your debtors to whom you sold goods on credit. Mr. Y is your creditors from whom you purchase goods on credit. Both are credit transactions. You did not pay money to anybody or you did not get money from anybody. Now, X told that I have to pay to you 10,000. Says yes. Then I told to X, you do one thing, because I have to give the money to Mr. Y 15,000. So you give this money to Mr. Y directly. To whom you said to X that you pay the money to Mr. Y. तो मिस्टर एक्स पेड द मनी टू मिस्टर वाई. वाई को आपको कितना देना था? 15,000. आपने कितना दिया? 10,000. और भी 5,000 वाई को आपको देना है, बट दैट विल गिव आफ्टरवर्ड्स. और एक्स का पास आपको कितना लेना था? 10,000. दैट आर यू हैव ऑलरेडी टेकन. तो एक्स का अकाउंट आपका अकाउंट से, एक्स का नाम आपका अकाउंट से क्लोज हो गया. एक्स का अकाउंट सेटल हो गया. एक्स विल नॉट पे मनी मोर टू यू बिकॉज X had to pay 10,000 to you. Instead of paying to you, X paid the money to Mr. Y. Now X paid the money to Mr. Y. Further one journal entry will come because X account will be closed and Y account will be reduced. And X is a debit because X is a debtor, so it is debit, and Y is a creditor, so it is credit. तो डेबिट को क्रेडिट करना है, क्रेडिट को डेबिट करना है. क्यों? तो आपको क्या एंट्री आएगा? वो आपको एंट्री आएगा वाई अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट. दिस इज 10,000. वाई को क्यों डेबिट किया? तो वाई क्रेडिट था इसलिए उसको डेबिट किया. तो उसका बैलेंस 10,000 कम हो गया और एक्स डेबिट था, उसको क्रेडिट कर दो, उसका बैलेंस 0 हो गया. These transactions, Y account debit to Mr. X is called inter-account transfer. और ये ट्रांजेक्शन आप कोई जगह नहीं लिख पाएगा. बुक नंबर 8 एक्सेप्ट नहीं करेगा तो if book number 8 is telling I will not take, so you cannot write anywhere. So book number 8 में ये ट्रांजेक्शन जाएगा. Like that, page number 195, you will get so many different type of transactions which I have told you. Which 5,000 payable to Akash is accepted by the Dhruti. Same example. Or sometimes it may happen the capital account and drawings account.
कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट, ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज डेबिट। कैपिटल का मीनिंग क्या है? द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय यू। ड्रॉइंग का मीनिंग क्या है? द मनी विच यू हैव टेकन फ्रॉम बिजनेस। अभी आपने 10,000 सपोज बिजनेस में दिया, बाद में 5,000 आपने विड्रॉल किया, तो ड्रॉइंग्स का बैलेंस कितना हो गया? 2,000। कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया? 10,000। अभी मैंने दोनों का एडजस्ट कर दिया, बोलो कि कैपिटल का नेट बैलेंस कितना है, बोलो तो 8,000। क्यों? ड्रॉइंग्स अमाउंट यू एडजस्ट विद द कैपिटल। दिस इज कॉल्ड इंटर अकाउंट ट्रांसफर। नेक्स्ट इज कमिंग नंबर 5 इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री। Opening entry you have seen. First point was the opening entry. As you are having the opening entry, like that you will have the closing entry also. To start the business, first entry which you have passed, that is called opening entry. To close the business or to close the accounts, business I will not say, to close the accounts, which entry you are passing, so it's called closing entry. Closing entry, opening entry, that you will not go in details because you should have some idea about the final account which is there in the part 2. But this much you come to know, closing entry close किसको करना है? इनकम एंड एक्सपेंस को करना है, इनकम और एक्सपेंस को। इनकम एंड एक्सपेंस, all the income, not assets and liabilities, you will get the different types of entries. You will get the entry for related with expense, you will get the entry related with income, you will get the entry related with loss. Loss also is there. Income, expense, loss, profit, gains. ये सब एंट्री आपको क्लोज करना है। Don't close the assets and liabilities. Assets and liabilities क्लोज नहीं होगा। क्लोज कौन सा होगा? इनकम, एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, ये सब अकाउंट्स जो है, दैट ऑल दिस इनकम, एक्सपेंस, losses or gains that you have to transfer to the one account to know your profit of the business, which is called profit and loss account. You have to open or you have to know your profit or loss of your business because you are keeping the accounts physically. By seeing the business, it is very difficult to identify whether your business is getting profit or loss. The accounts will say exact figure, how much profit you are getting or how much loss you are getting. How will you come to know business is getting profit or loss? For that you have to open one profit and loss account and one trading account. This account will say whether your business got profit or loss, because this account is having two sides. One is income side and one is expense side. There are also income sides and expense sides. Some of the expense, whatever the type of expense you have done, all expense, some of the expense you have write here, which is called the direct expense. Some of the expense you write here, which is called the indirect expense. I will not go details now. Direct expense, indirect expense क्या है? आपको ये सोचना है all expense, some of the expense you have to write here, some of the expense you have to write here. Similarly, direct income and indirect income. यहाँ जितना इनकम एक्सपेंस हुआ सब आपने यहाँ लिखा और डिफरेंस ऑफ दिस टू साइड्स. If income is more, then expense is profit. If income is less, then the expense is called loss. तो आपको यहाँ एक्सपेंस सब लिखना है एक एक करके. One by one expense, one by one income. Sorry, expense. This is income, and this is expense. Suppose salary is expense. You will write here to salary.
Suppose wages is expense, you will write there 2 wages. Suppose bank interest is your income or commission is your income, you will write by commission. Suppose goods you sold, that is income, that you write it here. तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों अकाउंट ओपन करना है और डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंस लिखना है, क्रेडिट साइड में ऑल इनकम लिखना है और डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स इज कॉल योर आइदर प्रॉफिट और लॉस. नाउ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट एंट्री यू हैव टू पास टू क्लोज दैट. सपोज सैलरी of rupees 5,000, wages of rupees 2,000, bank commissions of rupees 3,000, or commissions, bank commissions, जो भी आपको. One minute. So now tell me, in this case, what will you do? I'll give the example so that you can understand. You paid salary of rupees 3,000. You wrote salary account debit to cash. How much? 5,000. Paid wages. You wrote which is account debit to cash. Commissions, you wrote cash account debit to commission. A एक्सपेंस है, A भी एक्सपेंस है और A इनकम है. बाकी कैश, this cash will go to the where? बुक नंबर 5. और जो एक्सपेंस है, देखो एक्सपेंस सैलरी इज डेबिट, ऑलवेज एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट ऑनली, वेजेस इज एक्सपेंस डेबिट, लेकिन कमीशन इज इनकम फॉर दैट इट बिकम क्रेडिट. आपको क्या करना है, आपको एक ही ध्यान रखना है, एक्सपेंस डेबिट होगा तो उसको क्लोज करने के लिए जो एंट्री पास करना है विल मेक देम क्रेडिट. ये सैलरी अकाउंट को क्लोज करना है, तो सैलरी अकाउंट मैंने डेबिट में लिखा था, तो क्लोज करने का टाइम मैंने क्रेडिट में लिखा. और डेबिट किसको करो, डेबिट करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखा सैलरी. तो कोई एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, कोई एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा. आपको तो इतना भी पता नहीं है व्हाट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आप एक काम करो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करो तो भी चलेगा. डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, हो सकता है तो सबसे बेस्ट है जो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आता है उसका लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू दैट एक्सपेंस, जो एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में आता है उसका लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस. जैसे ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, यहाँ आ गया, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो इसका लिए क्या एंट्री आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट तो wages, because wages डेबिट हुआ तो उसको चेंज करना, इसका क्लोजिंग एंट्री. और कमीशन क्या है, कमीशन को क्रेडिट किया, उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करना है, रिवर्स करना है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. ध्यान रखना है मैंने जो बोला, एक्सपेंस हमेशा डेबिट एंट्री पास किया था, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करो. सैलरी डेबिट किया था, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करो. वेजेस डेबिट किया, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करो. बाकी डेबिट किसको करना है, और यहाँ जाएगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, यहाँ जाएगा तो क्रेडिट. कमीशन क्रेडिट है यहाँ, उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो कमीशन अकाउंट डेबिट. और कमीशन कहाँ जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इसलिए कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस. यहाँ देखो आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस इज एक्सपेंस, वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा परचेस एक्सपेंस.
डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स इनकम क्रेडिट था उसको डेबिट किया, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, डिविडेंड रिसीप्ट इनकम, लाइक दैट. Last is coming adjustment receipt. That is number 6. You are having a separate chapter on the basis of this adjustment entry. Adjustment entry का meaning क्या है? First of all, you have to know what is the meaning of that adjustment entry. Love, you have to adjust it. What you have to adjust? What you are going to adjust? The which it is not adjusted, that you are going to adjust. Is not it? Now, number 6 is called adjustment. Sometimes it may happen on the basis of the time, which time you should get the income or which time you should pay the money, मतलब you should pay the expense, that you are not getting or not paying. Once again I will tell you. You are having an employee, you have to pay the salary at the end of every month. One person is helping to you, he is working in your business, he is an employee, you are the employer, you have to pay the salary to him at the end of every month. सपोज कोई एक मंथ में और कोई एक साल में आप उसको सैलरी नहीं दे पाए, you told that this month salary I cannot give you, I will give the salary this month with the next month. Next month you have to give salary for 2 months. तो आपने क्या हुआ, ठीक टाइम पे पैसा नहीं दिया. और it may happen sometime that you have not received the money in time also. कोई एक आदमी के पास आपको कमीशन लेना था लेकिन वो ठीक टाइम पे पेमेंट नहीं दिया. लास्ट ईयर का अकाउंट्स क्लोज होने का टाइम हो गया, बट स्टिल यू डिड नॉट गेट द मनी. और ऐसे भी हो सकता है गलती से आप एक अकाउंट को डेबिट करना था, दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया. ये सब जो करेक्शन है, द मिस्टेक्स व्हाट यू हैव डन, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंट्री और सॉरी आई एम कमिंग हियर एडजस्टमेंट एंट्री. नो, व्हाई आई एम टेलिंग यू द क्लोजिंग एंट्री इज द फर्स्ट देन एडजस्टमेंट. अच्छा, एडजस्टमेंट एंट्री लेट मी से, देन आई विल टेल यू the rectification entry. Adjustment entry means suppose salary which you have not paid, you come. Rectification I will say you afterwards. Adjustment entry, salary in time you did not pay, तो salary became outstanding. आपको accounts रखना है 1/4/16 से 31/3/17 तक. If your accounting year is 16/17. अभी 31/3/17 ये डेट क्रॉस हो गया, लेकिन आपने सैलरी अभी तक पेमेंट नहीं दिया, तो वो साल में आपको लिखना है दैट मेरा सैलरी पेमेंट 5,000 बाकी है. कोई जगह पे लिखना पड़ेगा. इट इज नॉट दैट हाउ मच यू पेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल कीप द अकाउंट्स, और हाउ मच यू हैव रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर कीप द अकाउंट. नॉट लाइक दैट. कैश बेस यू आर नॉट डूइंग, मर्केंटाइल बेस और मिक्स्ड बेस. कैश और मर्केंटाइल दोनों मिक्स करके जो होता है दैट इज मिक्स्ड बेस यू आर कीपिंग द अकाउंट्स. मतलब जो अमाउंट पेमेंट करना था पेमेंट नहीं दिया, वो अमाउंट को भी कंसिडर करना है. जो अमाउंट रिसीव करना था लेकिन रिसीव नहीं हुआ, वो अमाउंट को भी आपको कंसिडर करना है. तो सैलरी सपोज इट इज गिवन द सैलरी ऑफ ₹20,000 इज अनपेड, सैलरी नॉट पेड, तो आपको 20,000 सैलरी का लिए आपको डाटा में पास करना पड़ेगा. सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी.
ये दिस इज कॉल्ड एज सैलरी ड्यू। आपको मन में कुछ नहीं ऐसा सैलरी ड्यू है तो क्यों लिखना है? लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका अकाउंट टैली नहीं होगा। दिस इज सैलरी व्हिच यू हैव नॉट पेड इन टाइम। सपोज ए कमीशन व्हिच यू हैव नॉट रिसीव्ड इन टाइम, कमीशन ऑफ 700 which is due to be received, due to be received मतलब salary outstanding is your liability and commissions due, commission due is called accrued, accrued, accrued commissions, commission due are on debit to commissions. A entry you cannot write anywhere. It is called adjustment entry. Adjustment entry मतलब ये entry ठीक टाइम पे पास हो जाना चाहिए था लेकिन पास नहीं हुआ। क्यों? It was not occurred, it was not happened, it was not paid in time, it was not received in time. So these amounts, whenever you are going to find out the profit or loss of your business, that amount you should consider whether it is paid or not paid. If it is not paid, you write not paid. If it is not received, you write not received. This is called not received, this is called not paid. This is called adjustment entry. Like that, you will get that adjustment entry in page number 197. And the last one which come in, that rectifications. Rectifications entry, that is number 6. Previous number was 5. मैं 6 लिखा था, I wrote 6 but that was 5. And now 6 is coming, rectification. RECTIFICATION. रेक्टिफिकेशन मतलब क्या है? करेक्शन। रेक्टिफाई करो। किसको रेक्टिफाई करना है? जिसको मिस्टेक हुआ और जहां मिस्टेक हुआ। अब मिस्टेक नहीं है तो रेक्टिफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। If it is wrong, then you will correct it. If it is correct, then don't make it wrong. Sometimes it may happen, Mr. ने एग्जाम्पल देता है, sometimes it may happen you paid salary. Paid salary of ₹700. इसका एक्चुअल एंट्री क्या था? करेक्ट एंट्री और एक्चुअल एंट्री, चलो करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाउ मच? दिस इज योर चार्ज। बट हमने रॉन्ग एंट्री, गलत एंट्री लिख दिया। इंस्टेड ऑफ सैलरी सपोज यू रोट वेजेस अकाउंट डेबिट। टू कैश। हुआ क्या है? यू पेड सैलरी, एंट्री होना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट बाय मिस्टेक अब गलती से वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कीजिए तो भूल हो गया, तभी इसका रॉन्ग होगा, करेक्शन करना है तो रेक्टिफाई एंट्री पास करना है। रेक्टिफाई एंट्री आपको ऐसे पास करना है, जब गलती से आपने लिख दिया डेबिट उसको क्रेडिट कर दो तो 0 हो जाएगा, और जो नहीं लिखा उसको लिख दो। तो आपको होना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ए एंट्री कैश क्रेडिट होना चाहिए, यहाँ कैश क्रेडिट हो गया। कैश में कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ भी क्रेडिट है, यहाँ भी क्रेडिट है। करेक्ट लिखना था लेकिन गलती से आपने कैश को क्रेडिट किया, सो देयर इज नो मिस्टेक इन द कैश, बट सैलरी को डेबिट करना था जो उसका जगह आपने वेजेस को डेबिट कर दिया। तो आर ई वन ऑफ रेक्टिफाई एंट्री व्हिच यू हैव टू पास, दिस इज करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री व्हिच यू हैव टू पास, द वेजेस अकाउंट गलती से डेबिट हो गया तो वेजेस को आप क्रेडिट कर दो। ठीक है? और सैलरी अकाउंट जो डेबिट नहीं हुआ, सैलरी अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। तो हुआ क्या? ए एंट्री आपने नहीं लिखा था, उसका जगह ए एंट्री लिखा था, और ये दोनों एंट्री को आपने कंबाइन करो तो ऑटोमेटिकली ये एंट्री आ जाएगा। कैसे? देखो, वेजेस डेबिट एंड वेजेस क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट विल बी लेफ्ट? सैलरी अकाउंट डेबिट कैश व्हिच यू वांट।
This is called rectified entry. Like that, rectification entry, you are having a separate chapter. There you will go in details. One more example let me say so that you can understand rectified entry how you are doing. Suppose you paid salary, one more example. You paid salary of 700, but you wrote salary account debit to cash, but आपने लिखा 400. पेमेंट कितना था 700. हमने पेमेंट का ट्रांजैक्शन कितना लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 400. हुआ क्या सैलरी 300 रुपया का एंट्री कम हो गया. तो 1 सेकंड करेक्ट कर लो. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एक एंट्री पास कर दो. कितना 300 रुपया. देखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 700 हो गया. सैलरी डेबिट 400, सैलरी डेबिट 300, तो 700 हो गया. कैश 400 क्रेडिट, कैश 300 क्रेडिट, तो 700 हो गया. इट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन. वन मोर एग्जांपल यू टेक. सैलरी आपने 700 रुपया पेमेंट दिया, लेकिन एंट्री में आपने 900 रुपया दे दिया. हाउ मच यू पेड 700. हाउ मच यू रोट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 900. ज़्यादा हो गया. ज़्यादा हो गया तो रिवर्स करना है. कैसे करूँ. सैलरी डेबिट हो गया 900, तो सैलरी का ऊपर क्रेडिट कर दो 200, तो एक्चुअली सैलरी डेबिट हो गया 700. यहाँ डेबिट 900 हुआ था, लेकिन मैंने 200 क्रेडिट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली योर डेबिट बिकेम 700. सिमिलरली कैश क्रेडिट हो गया 900, लेकिन मेरा को डेबिट कर दो कैश कितना 200, तो कैश क्रेडिट हो गया 700. बैलेंस देखो, यू जस्ट लुक द बैलेंस. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 700 रुपया होना चाहिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 900 हो गया था गलती से, तो मैंने सैलरी को क्रेडिट कर दिया 200, तो सैलरी बिकेम 700. कैश को क्रेडिट होना चाहिए 700, गलती से 900 क्रेडिट हो गया, 200 मैंने डेबिट कर दिया. दिस इज कॉल्ड RE. Like that, there are so many rectification entry will come. How many types of rectification entry will come? That depends on how many types of mistakes you are doing. So you follow this one. At the same time, you follow the exercise example also. In journal proper, all discussions I had done from your textbook illustrations. Now, few questions let you know from exercise. According to your textbook, the page number 198, the practical sum started from question number 4, 5, 6, 7, 8 and 9. From 4, 5, 6, 7, 8 and 9, from everywhere, one or two questions I will take it and I will explain it how you will write in the journal paper. 4. The Dhrumil Kamani stores business with the following assets and liabilities on the date of 1/1/15. Write the opening entry. Cash of rupees 18,000, bank balance of rupees 12,000, furniture of rupees 15,000, stock of goods of rupees 20,000, personal debtors of rupees 5,000, and 12 persons loan from Mayaben of rupees 10,000. You have to pass the journal entries, which is called the opening entry. I told you the cash, bank, this will not come in the journal paper. Even loan also will not come. For cash it is cash account debit to capital. For bank it is bank account debit to capital. For loan it is cash account debit to loan. Everywhere cash and bank is there. For that these three will not come. Remaining furniture, stock of goods, debtors, these three will come. So you will write the journal entries for opening entry, which will come in the journal proper. The furniture of rupees 15,000 is debit. Furniture of rupees 15,000 is debit. That is the fourth one. Furniture account debit of rupees 15,000. Stock of goods 20,000. Stock of goods account debit of rupees 20,000. Debtors of rupees 5,000.
debtors account debit of rupees 5,000 and creditors नहीं है, loan also नहीं है, to whose capital? Dhromil's capital account. The amount is 15 plus 5 20 plus 20 40,000. Actually capital is not 40, capital is more than 40, but journal paper which will come, that I told, this entry will come in the journal paper. Understands? Like that, one more question let me explain from question number 5. Question number 5, Sri Gujarat Stores does not maintain the separate subsidiary books for the transactions of the bills receivable, bills payable, purchase return, sales return. Record the following transaction in the journal paper. Draw a bill of rupees 8,000 on Ronak which is accepted and returned. This is called bill receivable. Matlab you have received a bill. I told if you have received a bill, that is called bills receivables, and if you are giving, that is called bills payables. So question number 5 ka 1, that is called bills receivable account debit which is accepted to run a bills receivable account debit to Ramnik account which is 8,000. Like that, if you are giving a bill to somebody else, then bills payables account will be credit. Like that, accepted a bill drawn. Second one, it is like that. Accepted a bill of rupees 3,000 drawn by Vijay and returned to him. We have given. Returned to him means we have given. Drawn, who has signed, that you will not come to know all details, but I told if you are getting the bills, this is bills receivable. If you are giving the bills, that is bills payable. And bills payable is credit. So Vijay account debit. Vijay account debit to bills payable account. How much? 3,000. This will come in the journal proper. Like that, return transactions. Number 4, goods of rupees 3,000 returned by Paresh to us. Returned by Paresh to us means we sold goods. Goods of rupees 3,000 returned by Paresh, matlab we sold goods. So sales return is debit. So sales return account debit to Paresh. This is goods of rupees 1,500 returned to Mahendra. We have given goods to Mahendra. Matlab we have purchased goods from Mahendra, that we are giving back. So Mahendra account debit to purchase return. That I am not writing. That you understand. Number 6. Gave goods of rupees 5,000 to Anath Ashram. Goods you have given 5,000 to Anath Ashram. That means charity account debit. Charity account debit to purchase account. Charity account debit to purchase, that is that transactions you cannot write anywhere except in journal proper. Like that, 6.2. Distributed goods of rupees 4,000 as free sample. Advertisement account debit to purchase account. This is advertisement account debit to purchase account. Next, withdrawn goods of rupees 8,000 from business for personal use. That is called drawings account debit to purchase. This is drawings account debit to purchase. Purchase a furniture of rupees 3,000 by giving the goods of rupees 2,800. This is a furniture you have purchased by giving the goods of rupees 2,800. Furniture account debit to purchase. That is, I want to write the 4th one. Furniture account debit to purchase account. How much? The amount, if it is getting confusions, which amount will write? Always you will write the furniture account, not the goods account. Number 5, you take the number 5. Goods of rupees 7,000 were destroyed by fire
for which the insurance company accepted a claim. Same type of questions it is given in your illustrations. Goods of rupees 7,000 destroyed by fire, for which the insurance company accepted a claim of rupees 5,500. This is 5. Loss due to fire account debit, insurance claim account debit to purchase account. Loss, how much it is there? 7,000 minus 5,500, only 1,500. Insurance company is given 5,500. 5 6 7, this is 7. Sixth one, an amount of rupees 2,000 is receivable from Nirali which cannot be recovered now or received now, that is bad debt account debit to Nirali. Sixth one, bad debt account debit to Nirali account. How much? 2,000. That same type of illustration it is given, that you follow it. Next I am coming 7th. 7th में देखो, record the following transaction in the journal paper subsidy Ekta. Brought furniture of rupees 7,000, goods of rupees 15,000, machinery of rupees 20,000 to start the business. I have already done opening entry. There no need to do it. You will do it. Scientific calculator of rupees 2,000, cellular phone of rupees 25,000 purchased from Kamlesh Traders. This journal 7.2. Scientific calculator account debit. This is the goods assets purchased on credit, and cellular phone account debit. Scientific calculator is 2,000 and cellular phone is 2,000, 25,000 to Kamlesh Traders account 27,000. This is the assets purchased on credit. Assets purchased on credit, that type of transactions will come to the journal proper. Next I am coming the bills related, that already you know. So I am not telling about the bills related. This is last one I am telling. 300 is payable to Manoj for interest. 300 is payable to Manoj for interest. This is 9th one. 300 payable, which is rupees 300 is payable to Manoj for interest. So you have to pay the interest to Manoj, the interest account debit to outstanding interest. Interest account debit to outstanding interest account. How much is 300? Like that entry you cannot write anywhere except this one. Now closing entry. Rectification entry 1 or 2 I will say. Rectification entry. See, 700 received from Renuka is recorded to Bhumika account. 700 received from Renuka. This is 8-1. 700, I am telling about the 8-1. 700 received from Renuka. Your journal is cash account debit to Renuka. But हो गया क्या? Is recorded is Bhumika account. This is rectification account. So Bhumika account debit to cash हो गया. Bhumika, once again I am telling you, you follow it. 700 received from Renuka is recorded to Bhumika account. So 700 received from Renuka, your journal is cash account debit to Renuka. हो गया क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू भूमिका. भूमिका को क्रेडिट हो गया तो भूमिका को डेबिट कर दो. तो योर रेक्टिफिकेशन एंट्री भूमिका अकाउंट डेबिट टू रेणुका.
How much? 700. Rectification entry. Ninth one I am telling, the first closing entry. Closing entry, suppose interest expense account. Ninth one. Interest expense account, that is debit, we have to make it a credit. So what will do? Profit and loss account debit to interest expense account. क्लोजिंग एंट्री. और एक बोल देता है डिविडेंड रिसिप्ट अकाउंट, दैट इज 7th, 9th, 7th. डिविडेंड रिसिप्ट अकाउंट of rupees how much? 700. Dividend received your income, it was credited, make it a debit. Dividend receipt account debit to profit and loss account. How much? 700. See students, few of these questions from everywhere I have done it from your illustrations. It is started from the 4th of page number 198, 4th, 5, 4, 5, 6, 7 and 8 and 9. All I have not done, everywhere few of the questions I have made it solutions. Just you go through the illustrations in details, and if you are able to understand the illustration, obviously you will be able to do the exercise. Hope you are understanding. Even though once again I want to tell you the same sentence, if it is not clear, you can ask me, I will clear your doubt. Okay, bye, all the best.